Hello students, in this video we will discuss our next topic, that is Stokes law of chapter number 10, mechanical properties of fluids of class 11th. So what is Stokes law? Students, Stokes give a statement for the viscous force of the object act on the object in a liquid, and he said that the viscous force is directly proportional to the viscosity. This means coefficient of viscosity of the liquid, and is directly proportional to the velocity of the object, and is directly proportional to the radius of the object. This means size of the object. Done. So force is directly proportional to eta RV, where eta is the coefficient of viscosity, r is the radius, and v is the velocity. Now we take a proportionality constant k, and f is equals to k eta RV. This proportionality constant by practical method we calculate k is equals to 6 pi. So force F is equals to 6 pi eta R. क्लियर? दिस इज स्टोक्स लॉ. अब स्टोक्स लॉ को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है? दिस मीन्स अगर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड, तो इस लिक्विड के अंदर अगर आप किसी बॉडी को ऐसे करोगे और वो बॉडी इसके अंदर v वेलोसिटी से मोशन करेगी, तो ये जो आसपास वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे, उनके अंदर भी क्या हो जाएगी, मोशन जनरेट हो जाएगी. और इससे दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेस्ट पे रहेंगे. तो इन मॉलिक्यूल्स के और जो रेस्ट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन जनरेट हो जाएगी. इस रिलेटिव मोशन की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, या मैं कहूं ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा. वो जो फोर्स है, वो फोर्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है: eta, velocity and radius r. eta coefficient of viscosity, v velocity, and r is the radius. Done. So this is Stokes law. Clear? Now we discuss terminal velocity. So what is the terminal velocity? Let's see. Hello students, in this video we will discuss about terminal velocity. So terminal velocity is a maximum value or maximum constant value of a body while falling through a viscous medium. This means अगर एक कंटेनर हमारे पास है और उस कंटेनर के अंदर आपने कोई विस्कस लिक्विड फिल किया हुआ है, तो अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से रिलीज कर देते तो वो बॉडी क्या करेगी, इस विस्कस मीडियम के थ्रू फॉल करेगी. क्लियर ना? इस विस्कस मीडियम से पास आउट होगी. तो इस विस्कस मीडियम से पास आउट होते हुए जो इसकी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. सो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी व्हाइल फॉलिंग through a viscous medium is known as terminal velocity. So when an object falling through a viscous medium, then a upthrust and a viscous force acts on it in upward direction, and the weight of the body acts in downward direction. So let us consider a body of density rho and radius small r falling through a viscous medium of density sigma, where sigma is the density of the liquid or fluid or viscous medium, and with velocity v. Clear? So what is the weight of the body? Weight of the body W is equals to mg. This means 4 by 3 pi r cube. This is the volume, and density rho, because mass is equals to density into volume. So mg is equals to 4 by 3 pi r cube rho g, equation number first, in downward direction, and the upthrust U is equals to 4 by 3 pi r cube sigma into g, because upthrust is equals to the weight of displaced liquid or displaced fluid, and the viscous force according to Stokes law F is equals to 6 pi eta RV. This is equation number second and third. Both are in upward direction. Clear? Now if V be the terminal velocity means constant maximum velocity or maximum constant velocity, then the sum of this upward force is equals to the sum of this downward force, and there are two upward force. First is upthrust and second is viscous force. So U plus F is equals to the weight of the object. So 4 by 3 pi r cube sigma g plus 6 pi eta rv is equals to 4 by 3 pi r cube rho g. We shift this term in RHS side. 6 pi eta rv, 4 by 3 pi r cube common, rho minus sigma into g. Now we cancel out pi to pi, and r cancel out these two power, and here r square is rest, and 6 cancel out 4. So v is equals to
2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ठीक है, बाय सॉल्विंग दिस। क्लियर ना? इसको सोल्व करते हैं तो फिर ये वाली टर्म आती है, ठीक है, क्लियर ना? तो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द acceleration due to gravity is inversely proportional to the coefficient of viscosity and is directly proportional to the difference between densities of object and medium. Clear? So this is terminal velocity. Done? Okay. Now we discuss about the flow of fluid. As we know that कि हर एक फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की, तो उसकी प्रॉपर्टी के बेस्ड ही टू टाइप्स के फ्लो हमारे पास होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द सेकंड वन इज turbulent flow. So what is the streamline flow? Streamline flow is the flow in which every layer of the liquid or every layer of the fluid, ठीक है, move in a straight line or move along a line. Clear? So this means if we have a tube of flow means a pipe type, ठीक है, just a pipe. So if the flow looks like that, this means all the layers of the fluid are parallel and looks like a streamline. Clear? Then this flow is known as streamline flow, and if the flow is not streamline, then this flow is known as turbulent. This type of flow is known as turbulent. In this flow, this is not streamline and the layers of fluid intersect each other. Clear na? So this is streamline and this is turbulent. So now we will discuss about critical velocity. What is the critical velocity? Students, if we increase the velocity of the flow of a liquid or a fluid, अगर हम किसी लिक्विड और किसी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक तो फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा. व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? So what is the critical velocity? Critical velocity is the maximum value. It is the maximum value of streamline flow above which the flow becomes टर्बुलेंट. जिसमें जिससे ऊपर की वेलोसिटी पे फ्लो कैसा बन जाता है? टर्बुलेंट बन जाता है. उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी. इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी गिवन एज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू k eta upon rho d, where eta, as you know, that is the coefficient of viscosity and rho is equals to density of fluid and d is equals to diameter of ट्यूब. डायमीटर ऑफ ट्यूब मीन्स जिस ट्यूब के थ्रू जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है उस ट्यूब का डायमीटर है. क्लियर? थैंक यू सो मच. Hello students, in this video we will discuss Bernoulli theorem. So it is the most important theorem of this chapter, of chapter number 10, mechanical properties of fluids. And what is this theorem? This theorem states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an ideal fluid in a streamline flow remains constant. This means किसी भी streamline flow पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो टोटल सम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. दिस मींस मैथमेटिकली
pressure energy plus kinetic energy plus potential energy remains constant. Now we prove this theorem. For the proof of this theorem, let us consider some a streamline flow of a fluid, ideal fluid. ठीक है, and we consider section A and section B. Let V1 be the velocity of the fluid at section A, A1 be the area of cross section at section A, P1 be the pressure at section A, and H1 is the height from the fixed surface or ground of section A. Done. Now A2 is the area at section B, V2 is the velocity at section B, P2 is the pressure, and H2 be the height. Clear? Let in time delta t the fluid enters in section A and covers V1 delta t distance in time delta t. This means delta t टाइम में जो लिक्विड यहाँ से एंटर करता है, ये डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इतना डिस्टेंस कवर करता है. दिस मींस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना डिस्प्लेसमेंट है v1 डेल्टा टी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वेलोसिटी v1 एंड टाइम t2, एंड at section B this displacement is equals to v2 delta t, done in time delta t. Now and let the density of the liquid, this means density of the fluid is rho. Now according to the conservation of mass, the mass enters through section A in time delta t is equals to the mass comes out through section B in time delta t. This means according to the conservation of mass, जितना fluid इससे enter करता है in time delta t में, उतना ही fluid इससे बाहर हो जाता है. So what is the mass of this fluid? Mass is equals to density into volume. So mass is equals to density rho into volume is equals to area into length. Mass m is equals to at section A rho into A1 is the area and displacement is, this means height is equals to v1 delta t. So rho into A1 v1 delta t, and at section B mass is equals to rho A2 v2 delta t. From this equation A1 v1 is equals to A2 v2. Clear? This equation is known as equation of continuity. This equation is known as equation of continuity. Now we calculate change the kinetic energy in the fluid. So change in kinetic energy, delta k is equals to k2 minus k1. This means half m v2 square minus half m v1 square, because v2 is the final velocity and v1 is the initial velocity. So delta k is equals to 1 by 2 m v2 square minus v1 square, and by the equation first we can put the value of mass in this equation. So delta k is equals to 1 by 2 rho a1 v1 delta t and v2 minus v2 square minus v1 square, where rho a1 v1 delta t is the value of this mass according to equation number first. Now change in potential energy. So what is the change in potential energy? Delta U is equals to final potential energy minus initial potential energy. So mg(h2) minus mg(h1). So common ले लेते हैं mg(h2) minus h1, and delta U is equals to, again from equation number first, the value of mass rho a1 v1 delta t into g h2 minus h1, equation number 4. Now the net amount of work done on this fluid, delta W is equals to work done on the fluid at section A minus work done by the fluid at section B. So delta W is equals to, what is the value of work done? Work done is equals to force into displacement, and force is equals to pressure into area. So work done is equals to pressure P1 into area A1 at section A into displacement at section A V1 delta T minus pressure P2 into A2 area at section B cross V2 delta T. So delta W is equals to P1 minus P2 A1 V1 delta T. Equation number 5. क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा. क्लियर ना? अभी हम लोग क्या करते हैं, अब जितना वर्क डन हमने इस पे किया है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम इस पे कर रहे हैं फ्लूइड पे, वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रहा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यूज हो रहा होगा. सो by the conservation of energy, this work done is equals to the delta k plus delta u. क्लियर ना? तो वर्क डन P1 minus P2 A1 V1 delta t is equals to, क्लियर, 1 by 2 rho A1 V1 delta t
V2 square minus V1 square plus rho A1 V1 delta T G S2 minus H1 from equation 3rd, 4th and 5th. So A1 V1 delta T, A1 V1 delta T and A1 V1 delta T कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं. So P1 minus P2 is equals to 1 by 2 rho V2 square minus V1 square plus rho G S2 minus H1. Now P1 plus 1 by 2 rho V1 square, इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको इधर LHS में शिफ्ट कर देते हैं, प्लस रो G H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1 by 2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2. क्लियर ना? दिस मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन बी. Thus we can say that pressure energy plus kinetic energy and plus potential energy per unit volume at every point of a streamline flow remains constant. This is Bernoulli theorem. Clear? Thank you so much.